Hello, good morning all. Welcome to Million Lights University. I'm Prachi and I'm course coordinator at Million Lights. Million Lights University focuses on making our learners more employable and also bridge the gap between skills needed by the industry and what is available. We all know that English is very important in professional life. English speaking plays an important role in one's career. Keeping this in mind, Million Lights has launched English Excellence course. I would like to give more information about the course first. In this English Excellence course, we have focused on making English grammar concepts clear as they are very important to speak fluently in English. Duration. The duration of this course is 1 month. The entire course will be conducted online. You will get 2 live sessions per week in which our instructor will clear English grammar concepts and also all your queries will be resolved. The course is certified course. After successful completion of the course, you will receive certification from MHRD, Government of India. Course fees are rupees 999 plus GST. As this is a limited period offer, we are currently giving 50% discount. So the course fees are rupees 999 plus GST. Now, it is my pleasure to introduce you to our instructor, Mr. Nikhil Dwivedi. Mr. Nikhil has a business degree in management and has been associated with banking industry, where he has trained a lot of people in language proficiency, personality development, and public speaking. He has worked with some top banking and insurance companies over the years and have helped a lot of people with their overall growth and personality development. He has an equally satisfying stint with fitness industry as well, where he got to work with some bigwigs of the fitness industry and fitness coaches and instructors in helping them out in their language skills and proper communication in their daily day-to-day tasks of interacting with their clients. We welcome you on board, Nikhil. Now I will request Nikhil to please continue with the session. Over to you, Nikhil. Thank you and good morning, everyone. All right. Thank you. Thank you. All right, everyone. So there is one thing that you can see on your screens right now, which is the certificate. And imagine the value of a certificate which has got the stamp of the Indian government. So imagine how valuable it is for you. So with this, I'll just again reiterate what our lovely coordinator Prachi has said about the course, that the English Excellence course comes with the certificate, which is MHRD approved and Ministry of Education certified, and which gives more value to your newly acquired skills. Right? So imagine you carrying a Government of India certificate with you, and imagine how much of a value is it going to give you when you sit in front of somebody and showing you credentials that how qualified you are, and plus qualified the same time you have got the certification for that, because a lot of people say that we have qualified, we have done this, we have done that, but they have not got any kind of a certificate to support their cause. Right here, after the successful completion of your course in the English Excellence, you will get this certificate. But as they say, there is no such thing as such free lunch. All right, so there is a small cost for this certificate, right, which Prachi has already told you about. Right, so make up your mind and get on with it. All right, so we'll start with our session which is on verbs. But before I go on to the verb, which is a very essential part of speech, I will just touch upon few things that why is English language so important after all? Right? Why is it so important? See, in our day-to-day course, we generally communicate to each other more often in our native language because it is very well understood by them. Imagine a situation wherein there is somebody who is not able to understand your native language. Imagine कि मैं अगर हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और आपको हिंदी नहीं आती, ठीक है? अब क्या होगा? मुझे हिंदी आती है, आपको हिंदी नहीं आती, आपकी नेटिव लैंग्वेज तेलुगु हो सकती है, आपकी कन्नड़ हो सकती है, गुजराती हो सकती है, मराठी हो सकती है, राइट? इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, राइट? हर मोमेंट पे कुछ 100-200 किलोमीटर में लैंग्वेज और डायलेक्ट चेंज हो जाते हैं, राइट? तो वहां पर आप कैसे बात करेंगे? इमेजिन
वहां पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो अभी आपको किसी से बात, अभी आप रास्ता खो गए, इमेजिन आप गए हैं महाराष्ट्र घूमने, ठीक है ना, आप गए हैं वहां पर कोल्हापुर या कहीं पे भी, आप पुणे घूमने गए हैं, मुंबई घूमने गए हैं, इमेजिन, राइट। और वहां पर आप कुछ रास्ता भूल गए, ठीक है, और आपको इंग्लिश आती नहीं है, आपको सिर्फ आती है अपनी हिंदी आती है, या फिर आपको कन्नड़ आती है, तेलुगु आती है, बट वहां की नेटिव लैंग्वेज आपको नहीं आती। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, ठीक है ना, तो आपको वो मराठी तो आती नहीं, ठीक है। अब बताइए, आपको रास्ता जानना है, अब आप कैसे पता करेंगे? जिस किसी से भी आप बात करेंगे, वो या तो बोलेगा अपनी मराठी में बात करेगा, या फिर उसके पास इंग्लिश अगर उसको आती होगी तो इंग्लिश में बात करेगा, ठीक है ना। मोस्ट केसेस में लोगों को इंग्लिश काफी टूटी फूटी जैसी भी आती तो है, ठीक है। तो वहां पर अब आपको तो इंग्लिश भी नहीं आती, तो आप क्या करेंगे? ठीक है। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इफ यू नो इंग्लिश वेल इनफ, देन you can communicate to anyone with ease, right, without any hassle। आप बात कर सकते हो उससे बड़े आराम से, क्योंकि उसको वो लैंग्वेज एटलीस्ट इंग्लिश तो समझ में आती है। हिंदी भले ही ना समझ में आती हो, कन्नड़ भले नहीं समझ में आती हो, मराठी नहीं समझ में आती, कोंकण नहीं समझ में आती, ओरिया नहीं समझ में आती, बहुत सारी लैंग्वेजेस है इंडिया में, ठीक है ना, वो बट उसको इंग्लिश समझ में आती है। तो आपका काम हो जाएगा वहां पर, राइट। आपका जो पर्पस है, आपको रास्ता जानना था या कुछ भी पूछना था, आपको पता चल गया, ठीक है ना। अभी यहाँ पर आई विल जस्ट रियली ट्राई टू शेयर वन वेरी वियर्ड इंसिडेंट दैट आई एनकाउंटर्ड व्हाइल आई वाज इन पुणे। आई हैपन टू गो इन दिस वन वे, वो बहुत सारे वन वेज होते हैं ना वहां पर, बहुत सिटीज में है, ठीक है। तो अब वहां पर पहली बात तो मेरे को मराठी आती नहीं थी, राइट, ना पढ़ना आता था ना बोलना आता था, मैं नया नया था वहां पर। तो वहां पर जो भी बोर्ड था उसमें वन वे का जो भी लिखा था, उसमें साइन के ऊपर कुछ समथिंग मुझे समझ में नहीं आया, पोस्टर लगे थे तो दिखा नहीं आता, मैं चला गया आगे। तो वहां पर मेरे को पुलिस वाले ने रोक लिया, वो मेरे को मराठी में खूब बता रहा है सब कुछ, वो बहुत सारी चीजें, ठीक है ना, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। अभी बाद में जाकर के जब सारी बातें खत्म हो गई, तब मैंने उसको बोला कि सर आई डोंट नो मराठी। क्योंकि मैं समझ गया था वो तो जो बोल रहा है मेरे को समझ में आ गया, तो अपनी नेटिव लैंग्वेज में बोल रहा है, ठीक है। तब उसने मेरे को बोला बड़े प्यार से, ठीक है ना, व्हाई डिडंट यू टेल इट अर्लियर, राइट, व्हाई डिडंट यू टेल इट अर्लियर। तो फिर मैंने बोला कि सर यू डिडंट लेट मी, because you were so furious over me that why I was driving on the wrong side, and so you were so furious that why didn't you tell me earlier? It could have saved a lot of energy for me, right? But still, because the communication was done in English, he understood that I don't understand Marathi. बट अगर वो वहां पर मैं ये मेरे को इंग्लिश नहीं भी आती होती और मैं ये नहीं भी बोल पाया होता कि आई डोंट नो मराठी, ठीक है ना, तो फिर वहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाती। वो कुछ भी बोलते रहते, मेरे को कुछ समझ में आता नहीं रहता, मैं कुछ बोलता रहता, उनको समझ में नहीं आता रहता, राइट। तो क्या है ना, इंग्लिश एक ऐसी ब्रिज लैंग्वेज है जो आपको जानना बहुत एसेंशियल है, पहली चीज। सेकंड चीज, राइट, सेकंड चीज कि अगर आपके पास स्किल सेट, लैंग्वेज सेट एक अच्छी क्वालिटी का है, तो आप उसको यूज करके अपने करियर में और प्रोफेशनल लेवल में बहुत ऊपर जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कई बार क्या होता है कि आपका प्रमोशन इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने प्रेजेंटेशन कैसे किया, आपने अपने बॉस के सामने या फिर इमीडिएट रिपोर्टिंग सीनियर्स के सामने प्रेजेंटेशन कैसे दिया। क्योंकि जब आप बात आती है प्रोफेशन की, करियर की, we have to give a lot of presentations on whatever we want to do. Imagine you are in sales, right? Like I had done this particular training with the insurance sector, wherein everyone was supposed to come up with a presentation how they are going to increase their number of policies, and in terms of sales, like how much of an amount of a premium will they be getting, what will be the the second year premiums and the likes. So they were supposed to give a projection, right, projection to the company sales head, that how are they going to go about the job while increasing the number of premium collection and number of policies, right? तो वहां पर क्या इश्यू होता है ना, अगर आपके पास कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल सेट अच्छे नहीं है, ठीक है, आप बहुत अच्छे हो गए लेकिन आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे सामने वालों को, तो सामने वाला को कैसे पता लगेगा कि आपकी प्लानिंग क्या है? बिकॉज ही सी द सेल्स हेड कैन नॉट गो on the road with you on the field everywhere, right? Because that is your job to do, that is the job of the agent to do.
Sales head cannot go there. Sales head will say, okay, give me the presentation for whatever work that you have done in the last 1 quarter or last 1 year, right? और पिछले 2 महीने में, पिछले महीने में आपने कितना किया, उसको मेरे को वो पूरा प्रेजेंटेशन दो. अभी उसको प्रेजेंटेशन देने नहीं आता, उसको पता ही नहीं कैसे बोलना है, सब टूटा फूटा उसमें लिख रखा है. तो इमेजिन योर चांसेस ऑफ गेटिंग प्रोमोटेड आर वेरी वेरी ब्लीक. बहुत छोटे चांसेस हो जाते हैं. आप ग्रो कैसे करोगे? तो वहां पर आपकी लैंग्वेज स्किल्स, आपका स्पोकन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बहुत आता है. और ये सारा डिपेंड कहां पे करता है? जब हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं, प्रोफेशनल की बात करते हैं, तो आपके पास लैंग्वेज स्किल्स होने बहुत जरूरी है. यू कैन नॉट गो इनटू द ऑफिस एंड से कि सर मैं प्रेजेंटेशन तो हिंदी में ही दूंगा. ठीक है ना? वहां इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट, राइट? So if you are in control of the skills, in control of the language, the grammar, English as a whole, then you will be more confident in your presentation. You will be more smooth and free flowing when you're expressing your thought, because you have got the content inside your head, but you are not able to organize it well enough so as to present it in a much better way that the person in front of you gets impressed from it, right? So in that regard it is very essential, right? And if we talk about the English language, the grammar as such, it is so important. Then there is one very important topic which comes in the English grammar, which is verb. Verb is one part of speech. Like there are total 8 parts of speech, but verb is the most essential part of speech when you talk about the English grammar, because we cannot have any conversation or anything written or spoken or whatever without the use of verb. Every sentence has verb in it. You cannot say anything, you cannot do anything, you cannot write anything without the use of verb. So it is that an important topic when you talk about the grammar as an English grammar, right? So talking about verbs today, a verb is the most important. Like I said, it is the most important. Whatever I just is being just mentioned in words as a pure definition for verbs, right? That verb is the most important part of the sentence, which I already said. Verbs are the words that describe an action or talk about something that happens, right? मतलब वो words, I'll have to lock the viewers because it is creating a lot of problem. All right. Okay. They are the words that describe an action or talk about something that happened. Meaning वो किसी action को describe कर रहे होते हैं. मतलब कोई भी action. मैं बोल रहा हूँ, that is an action. मैं लिख रहा हूँ, that is an action. I am talking. Talking is an action, right? So verbs are the words that talk about or describe an action, right? They can take different form depending कि उनका किस तरीके से use हो रहा है, right? Flat out, all the action that we do are called verbs. Meaning हम जो भी action करते हैं वो verbs कहलाता है. जैसे कि बोलना, लिखना, तोड़ना. अब literal sense में अगर इसको लेते हैं तो everything that you do while using your body in totality, blinking is an action, right? Speaking is an action, breathing is an action, sleeping too is an action. It might not look as if that you're sleeping, that oh my god, there isn't anything done while sleeping. You're sleeping, you're not doing anything, but essentially in grammatical terms, verbs, that is an action that you're doing. मतलब आप सो रहे हो, वो भी एक action ही है. आप उठ गए, I got up, that is an action. ठीक है ना? So all the things that you do while using yourself, your body, right, is called verbs, action, right? अब उसमें भी डिवीजन बहुत सारे आते हैं. When you talk about the verbs, right, they are essentially the action verb, which is the first form of the verb. उसमें भी further differentiations होते हैं कि action verb है, be verb है, auxiliary verbs है, ठीक है ना, infinite verbs है, transitive verbs है, बहुत सारी चीजें हैं, but उनको one by one अभी हम स्टडी करते हैं, right? So essentially the first form of verb, which is always the action verb, right? So action verb describe the action that happened. And actions are what? Wherein you use your body,
right? Like you write with your hands, writing. You sing with the throat, singing. You walk with the limbs, legs, walking. Clapping, you use your hand, so clapping is an action. Eating, you use your mouth, right? Eating means that's an action. Sleeping, आप सो रहे हो, sleeping, you are using your body, again that's an action. These are called action, literal action words, right? So action verbs क्या हो गए, ये सारे हो गए, ठीक है ना. डूइंग, इनको अगर अदर सेंस में बोले तो ये डूइंग वर्ड्स भी होते हैं. डूइंग मींस जहां पर आप कुछ कर रहे हो, राइट? डूइंग वर्ब्स, राइट? अब इनके भी देयर आर 3 फॉर्म्स फॉर इट, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना. फिर अभी इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या चीज होती है, सी मेजॉरिटी ऑफ द वर्ब्स फॉलो द टिपिकल पैटर्न ऑफ एंडिंग विद एन ईडी इन द पास्ट पार्टिसिपल. मींस जो हो चुका है, मींस he talked too much, right? He cooked my meal. Like example, रेगुलर वर्ब्स, इनको भी अगर फर्दर डिवाइड करें तो रेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में चले आते हैं, राइट? एक्शन वर्ब्स में, ठीक है ना. तो कुक बिकम्स कुक्ड एंड इन द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल कुक्ड हो गया, ठीक है ना. अगर वहां पर इमेजिन इफ द वर्ड रिमेन्स मोर और लेस द सेम with the exception of the addition of ed into it to indicate that it is a past or past participle, right? Then it is called as a regular verb, right? इसको imagine, regular verbs वो होते हैं जिनकी स्पेलिंग में अगर आप ed ऐड करते हैं में, तो फिर वो पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल मोड में चले आते हैं. उनकी स्पेलिंग में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता. जैसे टॉक, टॉकिंग, टॉक्ड, राइट? कुक, कुक्ड, राइट? तो इस तरीके से आपके रेगुलर वर्ब्स में आते हैं, राइट? अब इर्रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है, जहां पर आपके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल एकदम चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना, वो हो जाते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स. इमेजिन आई डू दिस, आई डिड दिस इन द पास्ट एंड आई हैड डन इट, वो पास्ट पार्टिसिपल हो गए, राइट? तो डू, डिड एंड डन, तीनों के फॉर्म्स चेंज हो गए ना यहाँ पर, तो ये हो गए इर्रेगुलर वर्ब्स, ठीक है. अभी क्या है, अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि ओके दैट निखिल सर ने तो इसे बता दिया कि ये ऐसे होता है, अब मुझे इसकी और फर्दर प्रैक्टिस चाहिए, तो मैं कैसे करूं, ठीक है. तो फर्दर प्रैक्टिस के लिए हमारी बहुत ही लवली कोऑर्डिनेटर प्राची ने आपको कुछ चीजें बताई सेशन स्टार्ट होने से पहले, दैट बिकॉज दिस बीइंग अ डेमो सेशन, आप वही डेमो सेशन में यू डोंट गेट द होल पैकेज, राइट? इफ इमेजिन यू गोइंग टू अ शॉपिंग मॉल, राइट? यू हैव गॉट दैट शोकेस ओवर देयर, राइट? But if you have to purchase something, you will have to go inside, right? To go inside, you will have, and if you want to try out something, if you want to buy out something that you like, then you will have to pay for that, right? So similarly, consider this demo session as a showcase session, right? अभी क्या है ना, अभी जो डिटेल्स इसके अंदर बहुत बढ़िया यहाँ पर प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है ना, फाइन डिटेल्स है, वो सारी की सारी आपको मेन कोर्स में मिलेंगी. दिस इज नॉट द मेन कोर्स, राइट? तो उस कोर्स में जब आप एनरोल कर लोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी. रेगुलर वर्ब से कितने सारे एग्जांपल हैं, इर्रेगुलर वर्ब से कितने सारे एग्जांपल्स हैं, राइट? कैसे उनको यूज करते हैं, सारी की सारी चीजें, राइट? अब हम बात करते हैं बी वर्ब्स की. द बी वर्ब्स शो स्टेट ऑफ बीइंग और एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग और समवन. मीनिंग बी वर्ब्स स्टेट ऑफ बीइंग, कि क्या मेरा क्या वेशभूषा अभी है करंटली एज ऑफ नाउ, राइट? लाइक इज, एम, आर, वाज, वर, दे आर जनरली एज used as be verbs, जो state of being दिखाते हैं. जैसे कि आपको मैं बोलूंगा कि आप लोग बहुत attentive हो, तो मैं बोलूंगा you are very attentive, you are state of being, right? You are very attentive, ठीक है. मैं stating verb दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है. You are a good player, you are a good student, ठीक है ना. और जनरली इसमें एक चीज और भी आती है, इसके साथ एक और रूल ऐड होता है कि अगर be verb जो है उसमें एक्शन वर्ब आ जाता है साथ में. एक्शन वर्ब मतलब फर्स्ट फॉर्म एक्शन, जो हमने पहले भी बात किया था, जहां पे आप अपने बॉडी को यूज करते हैं, तो वो मोस्ट केसेस में आईएनजी फॉर्म में एंड करता है, ठीक है. आईएनजी फॉर्म में, जैसे कि यू आर अ गुड प्लेयर, सो व्हाट डज अ गुड प्लेयर डू? यू आर प्लेइंग वेल, यू आर अ गुड प्लेयर, राइट? ये तो मैंने आपको बता दिया सिंपल उसमें, ठीक है ना. यू आर अ गुड प्लेयर, ठीक है ना. दैट इज स्टेटिंग वर्ब, दैट मैंने बोला यू आर अ गुड प्लेयर, स्टेटिंग हो गया ना. बट गुड प्लेयर क्या करता है? अच्छा खेलता है. सो यू आर प्लेइंग वर्ब. अब यहां पे क्या हुआ, आपका जो बी वर्ब है आर,
उसके साथ एक्शन वर्ब अगर आ गया तो प्ले से प्लेइंग वेल हो गया. यू आर प्ले वेल नहीं बोलते हैं. Most cases में when we talk about, we do a literal translation from our native language to the English language, right? Therein we commit errors. And if we are aware of such kind of rules, right, which we are looking specifically to teach you in this particular English excellence course, which comes with the certification of Ministry of Education and MHRD approved, Government of India से approval लग कर है, तो वहां पर हम इन्हीं चीजों पर काम कर रहे हैं, बेसिक्स पे ही काम कर रहे हैं. We I had done some very small simulation calculation yesterday. बेसिक एंड बेसिकली, ये दो ऐसे वर्ड्स है ना जो हम लोग डेली एटलीस्ट 50 to 60 टाइम्स यूज करते हैं इन अ डे. ठीक है ना. आप यू कभी भी किसी से बात करो, आप बेसिकली या फिर बेसिक, ये दो वर्ड्स ऐसे बहुत बार यूज करते हैं डेली रूटीन में, चाहे अपनी नेटिव लैंग्वेज में यूज कर रहा हूं चाहे इंग्लिश में ही यूज कर रहा हूं. ठीक है ना. अब इमेजिन करिए बेसिक इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है. हाउ इंपॉर्टेंट वर्ड दिस बेसिक इज, बिकॉज बेसिक टॉक्स अबाउट द फाउंडेशन ऑफ एनीथिंग, द रूट ऑफ एनीथिंग, राइट. इमेजिन यू हैव गॉट अ गुड फाउंडेशनल इंग्लिश, राइट. तो आप उसके ऊपर कितना अच्छा बन के बोल सकते हो, उसके ऊपर कितना अच्छा सा कवर अप कर सकते हो, क्योंकि बेसिक्स क्लियर है. कितनी बार हम लोग बाहर करते थे बेसिकली ये बेसिकली वो, बेसिकली मेरा मतलब तो वो था. तो बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट वर्ड क्यों है? क्योंकि इट टॉक्स अबाउट द फाउंडेशन, इट टॉक्स अबाउट द रूट्स. बिल्कुल एक ट्री की तरह, जिसके रूट्स अगर स्ट्रांग हैं तो किसी भी सिचुएशन आ जाए, कितना भी पानी बरसे, बर्फ गिरे, व्हाटएवर, एनी काइंड ऑफ गस्टी विंड दैट ब्लोस अराउंड, it will not be able to move an inch of that particular tree, just because the roots are so deep, foundation is so strong, right? So in similar fashion, if your foundation, your basics, your roots on the English grammar are good, then imagine any situation. Imagine you standing in front of say 1000, 2000, 10,000 people and giving a speech. That will not deter your confidence even a single bit, because your foundation is strong. You are confident, you know that I am well aware of my potential, right? So ये होता है बात यहाँ पर, फाउंडेशन की बात ये होती है. इसीलिए this course is there, wherein we are focusing on the basics of English grammar, right? And we want you all to succeed well. We as a company, we from the Million Lights want you all to succeed in life. And we are here for you. That is why we are among the very few people in the market who are taking the live sessions 2 times a week, just to have an interaction with you, just to, because you can see, you can have any number of equipment with you, you can have any number of books with you. If there is no one to help you out, there is no one to teach you out, if there is no one to tell you how to go around it, how to go with it, then you will not be able to understand anything what is written in the book. All right. So this is the course for it. I would request you all to be serious into it and join the course in the full time, and ask your friends as well, because I know that you know it well enough, but that is not enough. We all think that we know everything, but when the time comes, then it shows, oh my god, I thought that I was very good in it, but I think I'm not that good. I need to brush up on this. I need to get well on my English skills. I need to get well on my spoken English. I need to improve on my communication skills. This happens with a lot of people, right? So I would request you all to don't delay anything, because this particular discount offers is available only for a select few people. If you're that serious enough, you want to change something in your life, then you need to enroll in this course, and trust me, this will be a game changer for a professional career, right? Right. So all said and done, again coming back to my point, I just got carried away because I want you all to do well. So I mean, just comes out, right? So any verb which is followed, any be verb, right, which is followed by an action has to end with the ing form, right? You are playing well, you are listening well, you are studying well, right? So in this way, if any be verb is followed by the action verb, then it has to end with the ing form, right? Then we come to have verbs. Have means to have something, मतलब possession होना उसका, meaning to show a possession over something, मतलब किसी चीज की ownership show करना,
राइट? जैसे कि ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, ये मेरे कपड़े हैं, मीन्स showing the possession of, right? Has, have, and had. These are the three forms of the have verb, right? Has and have. These two are generally used in the present form. In the present, like, because see, we will talk about tenses as well. Tenses are time. Tense is equal to time in grammatical terms, right? So I have a luxury car. All right. I have a luxury car. All right. And had is used with the past form. All right. Like I had a toy car. I had a wonderful car. I had when I was young, I had a cricket bat with myself, which I used to play. Right. So had is used in the past form, has and have is used in the present context. Right. These are used as helping verbs in perfect tenses where they are followed by the past participle. अभी ये चीज तो अब ये चीज अभी समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये चीज टेंसेस का पार्ट है। जब हम टेंसेस में आएंगे तो टेंसेस के बारे में बात करेंगे, जो कि सेशन होगा हमारा फ्राइडे थर्सडे को, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि I have finished my work. Finished, finishing, finished. Right? इस तरीके से आपका तो वर्ब परफेक्ट टेंसेस में फॉलोड बाय द पास्ट पार्टिसिपल I have finished my work. ठीक है, तो यहां पर आपका have इस तरीके से यूज हुआ है। राइट, ये कुछ ऐसे ऐसे रूल्स हैं जिनको अगर आप सही से समझ जाएंगे ना तो आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। ठीक है ना। फिर बात आती है ऑक्सिलरी वर्ब्स की, हेल्पिंग या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। दे कम अलोंग विद द मेन वर्ब। मैंने क्या बोला, मेन वर्ब क्या होता है आपका? मेन वर्ब इज ऑलवेज द एक्शन वर्ब, मीनिंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है ना। एंड दे डिस्क्राइब द टाइम ऑफ एक्शन, मतलब किस टाइम पे वो एक्शन हुआ। राइट, बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स, ये कुछ चीजें हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर इफ यू हैव, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माय अर्लियर सेशंस दैट सिट डाउन विद अ पीस ऑफ पेपर और अ नोटबुक, अ पेन। ठीक है ना, नोट्स लिखते जाइए आप साथ साथ में। ठीक है ना, क्योंकि नोट्स लिख के रखेंगे तो आपके दो चीजें होती है नोट्स में। जब आप नोट्स लिखते हो तो आपके, देखिए सी, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, द मोर द नंबर ऑफ सेंसेस यू यूज व्हाइल डूइंग एनीथिंग, राइट, द बेटर विल बी योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना। अभी इसको समझिए ऐसे, वी गॉट 5 सेंसेस, साइट, स्मेल, टेस्ट, टच एंड हियरिंग। 5 सेंसेस हो गए। अब जितने ज्यादा से ज्यादा सेंसेस आप यूज करेंगे फॉर टू लर्न एनीथिंग, इट विल बी दैट डीप रूटेड इन योर सिस्टम। किसी भी चीज में आप कोई भी काम करो लाइफ में, आप खेल रहे, यू इनटू स्पोर्ट्स, यू इनटू एनीथिंग, इफ यू आर अप्लाइंग maximum number of senses, then you will have the chances of you succeeding become high. So while you're taking notes, there are 3 senses that we're using. First sense, you're hearing, right? Second sense, when you hear something, your thought process starts moving, right? Third sense that you use, which is the sense of touch, wherein you use your pencil or pen to take down the notes on the paper. So you're using 3 senses in one go. So आपका जो लर्निंग का प्रोसेस है वो और स्ट्रांग हो जाता है जस्ट बिकॉज यू आर यूजिंग मेजॉरिटी ऑफ द सेंसेस। राइट, तो इस तरीके से यूज करना चाहिए। तो नोट बनाना इज दैट हेल्पफुल। ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं, बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स, देयर आर कैन, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैड। दीज आर ऑल हेल्पिंग वर्ब्स। राइट, helping verbs always stands in front of the main verb. Imagine helping verb, जो आपका helping verb है, is, am, do, does, have, had, whatever, they all stand in front of the main verb. और main verb क्या होता है? Main verb action verb होता है, जहां पर कोई action हो रहा है। Right? Like for example, Lily can ride. Ride is an action. ठीक है, riding means wherein you're, अब नाउ यहां पर आ रहा सब जो आपका ऑब्जेक्ट है, व्हाट। लिली कैन राइड, व्हाट कैन लिली राइड? लिली कैन राइड हर सिस्टर्स बाइसिकल। बाइसिकल वो ऑब्जेक्ट है विच लिली कैन राइड।
तो यहां पर आपका इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब जो है कैन in front of the main verb, which is always the action verb, can ride her sister's bicycle. तो ये आपका इस तरह बन गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, आप नोट लिख लीजिए, ठीक है। नहीं तो आपके पास वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, बट आई विल स्टिल इंसिस्ट, राइट, दैट यू लिव इन द मोमेंट. एंड हाउ कैन यू लिव इन द मोमेंट? वेयर यू गेट इन्वॉल्व विद द मोमेंट. Sitting with an expectation of that I will get the video, then I will again listen to it and then try to understand whatever there is. That is one thing of doing. But living in the moment will help you a lot, because living in the moment means that you are taking the notes there and then, right? मौके पे आप जो कर रहे हो ना, that is called living in the moment. तो आप उस मोमेंट पर नोट्स जो बना रहे हो ना, वो ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके, rather than you going back home and taking down the link of the video. Okay, निखिल सर ने तो एक वीडियो दिया था, मैं उसको पढ़ के समझ लूंगा, वो एक चीज होगी. बट आप जब नोट लिखेंगे ना, तो वो ज्यादा डीप रोटेड जाएगा आपके पास, ठीक है ना. तो अभी यहां पर देखिए, लिली कैन राइड हर सिस्टर्स बाइसिकल. हेल्पिंग वर्ब क्या है यहां पर? कैन, ठीक है. मेन वर्ब क्या है? राइड, एक्शन, राइट, एक्शन, राइड. तो हेल्पिंग वर्ब कहां पर आया? मेन वर्ब के ठीक पहले, ठीक है. तो अब यहां पे क्या बन गया? लिली कैन राइड हर सिस्टर्स बाइसिकल. तो इस तरीके से आप कहिए हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब का हो जाता है, ठीक है. अब बात आती है हमारी काइंड्स ऑफ वर्ब्स. तो टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव मतलब क्या हुआ? जो ट्रांजिट कर रहा है किसी पे, मीनिंग अभी आगे देखेंगे. इंट्रांजिटिव मतलब क्या? जिसको कि ट्रांजिट करने की जरूरत ही नहीं है. तो इस तरीके से ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव बन जाता है. अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ठीक है ना. ट्राई टू अप्लाई योर माइंड. ट्रांजिटिव वर्ब है क्या? ये सारी चीजें अगर आपको पता होंगी ना, तो आपका जो लैंग्वेज में जो भी आप बोलना चाह रहे हैं ना इंग्लिश में, वो बहुत स्मूथ बन जाएगा, बिकॉज यू नो ऑल द रूल्स, राइट. यू नो ऑल द रूल्स, यू नो ऑल द यू नो वेयर टू पुट व्हाट. हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे जाना है, मेन वर्ब कहाँ पे जाना है, वो किस फॉर्म में होगा, सब्जेक्ट कहाँ पर आना है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर आना है, ये सब आपको जब पता होगा ना, तो आप खट 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 उसमें, जैसे क्या होगा ना, when we were in when we were in childhood days, then we used to have this kind of puzzles, wherein you have got all different shapes of pieces of puzzle over there, and the only thing that you were supposed to do is that put them in the right slots, right. So this is what happens when you know what to put where, which form to use where, right, which type of thing to use where, then you just need to put them in the slots and the sentence will be complete. And a meaningful sentence is what you want, and that will happen if you are aware of where to put what, right. कौन सी चीज को कहां पर रखना है. हेल्पिंग वर्ब के आगे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के पीछे क्या होगा, सब्जेक्ट के आगे क्या होगा, सब्जेक्ट के पीछे क्या होगा. अगर इमेजिन करिए सिंपली, हेल्पिंग वर्ब के अगर आगे आपका कोई एक्शन वर्ब आ रहा है तो आईएनजी फॉर्म में होगा, ठीक है ना. छोटे छोटे रूल्स हैं, आपको पता, बस खाली सिर्फ आपको सारा पता है ना, एबीसीडी सब पता है. यू जस्ट नीड टू पुट देम इन द राइट प्लेसेस, दैट्स इट. देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इनटू इट, बट द ओनली थिंग इज दैट कि आपको जो बता रहा है, जो समझा रहा है, वो किस तरीके से पढ़ा रहा है, ठीक है ना. अभी यहां पर आई कुड हैव ओनली सेड ओके दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड दिस इज दैट, दिस इज दिस, खत्म, एंड ऑफ स्टोरी. मोस्ट ऑफ द पीपल डू दिस ओनली. वो मार्केट में क्या कर रहे हैं, आएंगे, टॉपिक है, उसको पढ़ के खत्म कर दिया, दैट्स इट, and you are paying for that. But here what we are doing, we want you to learn better. We want you to learn better. See, there is a difference between learning and learning it better. Learning it better means आपको समझ आ रहा है. It's not that I am here, that Nikhil sir is here and Nikhil sir ने सिर्फ इतना पढ़ा दिया, काम खत्म हो गया, that's it. Nikhil sir ने क्लास खत्म की तो सब over. Okay, goodbye students. ऐसा नहीं है यहाँ पर. I want you all to succeed well in life. That will happen only if you are in the moment, right. And in the moment will happen only in the live sessions which we have designed for you all, right. तो ये चीजें हैं, डिफरेंस इज दिस, ठीक है. तो ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में क्या पढ़ाते हैं? ट्रांजिटिव मींस ट्रांजिट. ट्रांजिट से सोचिए, ट्रांजिट मींस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये होता है ट्रांजिशन, ठीक है ना. अ वर्ब व्हिच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस, मीनिंग एक वर्ब, ठीक है, वर्ब which requires an object जहां पर वो ट्रांजिट करे
टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब, मीनिंग वो वर्ब जो ऑब्जेक्ट पे जाकर लैंड करे, ट्रांजिट करके, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। सेंटेंस के छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। द मैन किल्ड अ स्नेक, ठीक है। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है? द मैन। द मैन किल्ड, किल्ड इज एन एक्शन, एक्शन वर्ब, ठीक है। द मैन किल्ड, तो यहां पर आपका वर्ब क्या हुआ? किल्ड। अब द मैन किल्ड व्हाट? द मैन किल्ड एयर। What did the man kill? The man killed a snake. So यहां पर क्या ऑब्जेक्ट? The man killed a snake. तो ये जो आपका वर्ब है killed, that is transiting on to the object which the man has killed. So ये ट्रांजिट हो रहा है ना, ट्रांजिट है फ्रॉम वर्ब टू the action verb to the object. The man killed a snake. I ate my breakfast. मैंने मेरा नाश्ता कर लिया। I ate my breakfast. So I ate. Ate is action verb. My breakfast. You need an object for the sense to be completed with the use of that particular verb which is in the sentence. I ate my breakfast. ठीक है, तो ये होगा ट्रांजिटिव, मतलब कि ट्रांजिट कर रहा है टू शो व्हाट, टू शो दैट कि वो वर्ब ने क्या किया। ate what? I ate air doesn't make any sense. I ate, only I ate, that doesn't convey the proper sense. I ate my breakfast. I ate my lunch. ऑब्जेक्ट यहां पर आपका क्या? लंच हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? आपका ब्रेकफास्ट हो गया। तो I ate my breakfast, तो ये ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। इंट्रांजिटिव इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, जहां पर आपको ऑब्जेक्ट नहीं भी हो तो भी उसका सेंस कंप्लीट है। सी, if you don't have any object into it, a verb which does not require an object to complete its sense is called as an intransitive verb, right? In literal sense. So the sun shines, right? यहां पर sun itself is an object, shines is a verb, ठीक है। the sun shines, that's it. अगर वहां पर आपके पास नहीं भी है कुछ चीज तो भी वो सेंस पूरा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि निखिल स्लेप्ट ऑल डे, माय नेम हो गया, निखिल स्लेप्ट ऑल डे। यू डोंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट फॉर दैट स्लीपिंग एक्शन टू बी डन, इट इज वेल अंडरस्टूड। You can add, but even if you don't add any object into it, the sense is completed. You could have said that Nikhil slept all day on sofa, Nikhil slept all day on bed, Nikhil slept all day on floor. He could have slept anywhere, everywhere, but slept in itself conveys the action. You don't require an object for the action to be promoted or to be communicated in that sense. You don't require any object for it. ठीक है ना? Nikhil slept all day. That the sense is very well communicated without the use of the object here. तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर। तो ये यहां पर बन जाते हैं आपके इंट्रांजिटिव वर्ब्स, राइट। फिर बात करते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। फाइनाइट वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन नंबर ऑफ पर्सन और सब्जेक्ट, मीनिंग जो अपने फॉर्म्स को चेंज करते हैं जहां पर अचानक से आपके नंबर ऑफ पर्संस या फिर सब्जेक्ट चेंज होता है, ठीक है ना। डिफरेंट टेंसेस में दे आल्सो टेक डिफरेंट फॉर्म्स व्हेन वी विल टॉक अबाउट लेटर, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल, शी ओपनड द डोर, फाइनाइट हो गया, फाइनाइट हो गया, ये फाइनाइट वर्ब है। शी ओपनड द डोर, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। आई कुडंट सॉल्व द प्रॉब्लम, कुडंट सॉल्व, ये फाइनाइट है, ठीक है ना, फाइनाइट है। अभी इसका चेंज जब होगा तब वहां पर बात आएगी कि ये इनफाइनाइट है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, ठीक है। Non-finite verbs do not change their form when the number of person or subject changes, right? Meaning the teacher encouraged the students to work hard, right? So here encouraged is finite, to work, क्योंकि work जो है, वर्क तो इनफाइनाइट हो सकता है ना, टू वर्क नॉन फाइनाइट हो गया आपका, ठीक है ना। और अगेन अनदर एग्जांपल, इफ यू लुक एट the students were asked to submit their assignments by Friday, were asked finite हो गया, ठीक है ना। to submit non finite हो गया,
तो सबमिट तो कुछ भी हो सकता है, कितने भी लेवल तक आप सबमिट कर सकते हैं, तो वो आपका नॉन फाइनाइट होगा। नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पर्सन चेंज हुए तो वहां पर उसका फॉर्म भी बदल गया, तो वो उस तरीके से नॉन फाइनाइट हो गया। ठीक है, नाउ दिस कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ verb, which is the subject verb agreement. These are some good number of rules. If you don't have any notebook or pen with you, please take out one right now, because this is very important. Okay, so talking about the subject verb agreement, they are, see, there are a lot of things which are very self-suggestive, like the subject and the verb are most important elements of sentence. I had said so many times during my session so far, right? The relation between the subject and the verb, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो रिलेशन है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला पर्सन, दूसरा नंबर, राइट? मतलब पर्सन पे और नंबर पे, ठीक है ना? और हमेशा जो वर्ब है इट हैज टू अग्री विद द सब्जेक्ट इन टर्म्स टू पर्सन एंड नंबर, ठीक है ना? ये पहला रूल है, यू मस्ट रिमेंबर इट, ठीक है? द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है? और क्योंकि यहां पर हम बात करें वर्ब मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट, तो यहां पे कुछ तो आइडिया लग रहा है कि अगर वर्ब सब्जेक्ट से अग्री करती है तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अकॉर्डिंगली वो चेंज भी होना चाहिए उस तरीके से, या प्लूरल है तो अकॉर्डिंगली चेंज होना चाहिए, ठीक है ना? सो इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब हैज टू बी इन प्लूरल, ठीक है? एग्जाम्पल अगर यहां पे देखें, आई एम एन एक्सीलेंट सिंगर, आई एम एन एक्सीलेंट सिंगर, सो आई सिंगुलर, सिंगर वो सिंगुलर है तो आई एम एन एक्सीलेंट सिंगर हो गया, ठीक है ना? और अगर मैं इसको थर्ड पर्सन प्रोनाउन के बारे में बात करूं तो ही इज एन एक्सीलेंट सिंगर, ठीक है ना? अब बात यहां पे चेंज करते हैं, सडनली द सब्जेक्ट चेंजेस, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट चेंजेस, ठीक है ना? तो यहां पर आपका वर्ब कैसे चेंज होता है, हेल्पिंग वर्ब जो की बात कर रहा हूं, वी, नाउ द सब्जेक्ट चेंज हो गया ना, सिंगुलर से प्लूरल में आ गया वी, वी इज जनरली एड्रेस टू दोस पीपल, जहां पर नंबर ऑफ पर्सन बढ़ जाते हैं, आई एम सिंगुलर वी व्हेन वी टॉक अबाउट आवरसेल्फ, ठीक है ना? वी, जहां दो तीन लोग एक साथ खड़े हो गए तो वी हो जाता है, ठीक है? वी आर, अगेन इससे आर हो गया, एक्सीलेंट सिंगर्स, सिंगर्स प्लूरल हो गया, मोर नंबर ऑफ सिंगर्स आर देयर, मोर नंबर ऑफ सिंगर्स तो सिंगर्स हो गया प्लूरल में, सो वी आर एक्सीलेंट सिंगर्स, ठीक है ना? वर्ब हैज टू अग्री विद द नंबर पर्सन और द सब्जेक्ट इन दैट रिगार्ड्स, ठीक है? नेक्स्ट रूल, two or more singular subjects are joined by and usually take the verb in the plural form, ठीक है? मीनिंग two or more singular subjects joined by and, ठीक है ना? they usually take the verb in the plural form, जैसे कि iron and coal are found in India, तो iron and coal आपका क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट है, ठीक है? आयरन एंड कोल्ड आर हो गया यहां पर। अब आपका हेल्पिंग वर्ब यहां पर इज नहीं रहेगा, क्योंकि टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट, यहां पे दो सब्जेक्ट्स है ना, तो यहां पर जो वर्ब यूज होगा हेल्पिंग वर्ब वो भी प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, वो इज नहीं यूज होगा। आयरन एंड कोल्ड इज फाउंड इन इंडिया नहीं होगा यहां पर, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट टू सब्जेक्ट्स, सो आयरन एंड कोल्ड आर फाउंड इन इंडिया, राइट? Again, another rule, if two nouns suggest one idea or refer to the same person or thing, the verb must be in singular, meaning दो nouns अगर suggest कर रहे हैं एक ही idea या same person और thing को, तो verb वहां पर singular में होगा, ठीक है ना? जैसे कि bread and butter is a wholesome food, क्योंकि bread and butter तो एक साथ यूज हो रहे हैं ना, अलग अलग तो यूज हो नहीं रहे, जैसे कि ऊपर था iron and coal, they were two different subjects used differently, hence number of subject is different, hence the verb the helping verb, the auxiliary that will be used in that case will be in the plural form. But here, because bread and butter, however different subjects altogether, bread is different and butter is different, but because they are used jointly for one particular thing, that is the wholesome food, so
यहां पर जो वर्ब यूज होगी विल बी इन द सिंगुलर फॉर्म, ब्रेड एंड बटर इज अ होलसम फूड. I hope I'm making myself pretty clear here because I have put in lot of effort so that कि जो भी कंटेंट, जो भी डिस्कशन मैं आपके साथ करूं वो बिल्कुल लूसिड हो, एकदम बेसिक में हो, ठीक है ना, क्योंकि फोकस ही उसी में है, राइट. सो ब्रेड एंड बटर इज अ होलसम फूड, ऑलराइट. अब टू अनदर रूल वी कम, words that are joined to a singular subject by with or as well as, ठीक है ना, with or as well as do not affect the number of verb, ठीक है ना. मतलब अगर मान लीजिए कोई भी वर्ड्स हैं जो कि with या फिर as well as का यूज कर रहे हैं, वहां पर वर्ब का नंबर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, वो सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है. जैसे कि द हाउस विथ इट्स फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर तो यहाँ पे दो चीजें आ गई ना, हाउस और फर्नीचर डिफरेंट सब्जेक्ट आ गए. द हाउस हम यहाँ पे विद का यूज कर रहे हैं, द हाउस विथ इट्स फर्नीचर वॉज बर्न्ड, वर नहीं वॉज, क्योंकि यहाँ पे विद का यूज हो रहा है, ठीक है ना. इसको अगर बोले मकान अपने फर्नीचर के साथ जल गया, जल गए नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, जल गया सिंगुलर फॉर्म यूज होगा. अगेन अनदर रूल, when two or more subjects in the singular subject, remember, listen to this again, when two or more subjects in the singular subject joined by or, nor, either or, neither nor, the verb will be in the singular form. मतलब अगर दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के और जिनको कि और, नॉर, आइदर और से अगर अगर मेंशन किया जा रहा है, तो फिर वहां पर जो वर्ब यूज होगा वो आपका सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, ठीक है. जैसे कि आइदर टॉम और, आइदर और, सी, आइदर टॉम और हैरी वॉज एब्सेंट, मतलब या तो टॉम या तो हैरी एब्सेंट थे, ठीक है ना. तो आइदर टॉम और हैरी वॉज एब्सेंट, वी नॉट सेइंग आइदर टॉम और हैरी वर एब्सेंट, ठीक है, क्योंकि यहां पर जब आइदर और, नॉर, नाइदर नॉर की जब बारी आती है तो वहां पर वर्ब जो यूज होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक है. इफ वन ऑफ द सब्जेक्ट इज इन प्लूरल, द वर्ब मस्ट बी इन द प्लूरल, राइट, एंड द प्लूरल सब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियरर द वर्ब. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं उसको. इफ वन ऑफ द सब्जेक्ट इज इन प्लूरल, द वर्ब मस्ट बी इन प्लूरल, ठीक है, ये तो क्लियर है. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब तो प्लूरल होना ही होना है, ये तो क्लियर पहले से कर दिया गया, ठीक है. और प्लूरल वर्ब जो होगा वो सब्जेक्ट के नियरर होगा, ठीक है ना. जैसे कि द फार्मर और हिज सर्वेंट्स, सर्वेंट प्लूरल है ना, सो जो वर्ब है वो उसके नियरर होगा सब्जेक्ट के नियर. द फार्मर और हिज सर्वेंट्स वर कॉट, मीनिंग फार्मर या फिर उसके सर्वेंट्स पकड़े गए थे. इसको हिंदी में समझे, ठीक है. द फार्मर और हिज सर्वेंट्स वर कॉट, राइट. Coming to another rule, when a plural noun comes between a singular subject and its verb, right, most often we commit this error that verb is often wrongly made to agree with the nearest plural noun. गलत कर देते हैं हम लोग वहां पर कि अगर plural noun सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ रहा है तो वहां पर हम जनरली गलत कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, ठीक है. We should be very careful while using such sentences, right? Like a combination of colors charms the eyes. Combination of colors charms the eyes. चार्म नहीं लिखेंगे यहां पर क्योंकि कलर्स की बात आ रही है. ऑलरेडी यहां पर आपका जो सब्जेक्ट है वो कलर्स है. कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स प्लूरल फॉर्म में है. चार्म्स द आई, ठीक है ना. आप सिंगल आई वाले तो हो नहीं कि इट चार्म द आई, नॉट लाइक दैट, राइट. charms the eyes because you got a pair of eyes. We always say a pair of eyes, a pair of scissors. Scissor तो एक सिंगल सब्जेक्ट है, but it is in grammatical sense it is always a pair of scissors, right? We never say pair of scissors, right? In that sense because वो pair है, दो pieces हैं, वो pair बनता है. The pair is always in plural. A pair of shoes, a pair of gloves, right? In that sense, okay. So you have to be very careful in this regards, right? When the subjects joined by or nor, ठीक है, are of different persons,
the verb agrees with the subject nearest to it, meaning अगर सब्जेक्ट्स और या नॉर से और डिफरेंट पर्सन्स के हैं तो वहां पर जो वर्ब है वो सब्जेक्ट जो उसके नियरेस्ट है उससे अग्री करता है. ठीक है. आइदर ही और आई एम टू ब्लेम. आइदर ही और आई, यहां पर आपका वर्ब नियरेस्ट टू द सब्जेक्ट जो नियरेस्ट होगा उसके हिसाब से वो फॉर्म करेगा. आइदर ही और आई एम टू ब्लेम. ठीक है. तो इस तरीके से आपको ये रूल अप्लाई करता है. ठीक है. नाइदर यू नॉर ही हैज. ठीक है ना. सिंगुलर फॉर्म. नाइदर यू नॉर ही हैज टोल्ड अला, मतलब तुमने और उसने दोनों ने झूठ नहीं बोला. ठीक है. तो इस तरीके से आपका ये रूल काम करता है. तो ये रूल्स इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इनको मास्टर कर लिया तो यू आर डन. ठीक है. अगेन टू अनदर रूल, आइदर नाइदर ईच एवरी एवरीवन मस्ट बी फॉलोड बाय अ वर्ब इन द सिंगुलर. ठीक है. अगर जहां भी कहीं आप आइदर का यूज कर रहे हो, नाइदर का यूज कर रहे हो, ईच का यूज कर रहे हो, एवरी एवरीवन का यूज कर रहे हो, तो वहां पर वर्ब जो होगा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगा. ठीक है. मीनिंग फॉर एग्जाम्पल, each of these boys is intelligent. each of these boys is intelligent. ठीक है. सिंगुलर फॉर्म में हो, ये रूल है. ठीक है ना. ये रूल है, you cannot challenge it. That's it. There are certain rules that you need to follow. You cannot challenge it. Like you have to wear a helmet when you're driving a scooter. You cannot challenge it. You have to wear a seatbelt. That is a rule. You cannot say why, because they are meant for your safety. Similarly, there are certain rules in the English grammar which are meant for you so that you do not commit an error. ठीक है. तो आपके बेहतरी के लिए यू कैनॉट चैलेंज इट. ठीक है. एवरीवन इन द क्लास वाज शाउटिंग. ठीक है. देन कमिंग टू अनदर रूल व्हिच इज मैनी, अ फ्यू, सेवरल, सम और बोथ. दे टेक द प्लूरल वर्ब. राइट. फॉर एग्जांपल, अ फ्यू ऑफ द स्पेक्टेटर्स आर स्टिल वाचिंग द मैच. अ फ्यू ऑफ द स्पेक्टेटर्स मतलब कुछ लोग अभी भी मैच देख रहे हैं. ठीक है. तो इस तरीके से आपका आइदर नाइदर ईच every and everyone must be followed by a verb in the singular है. और जब यहां पर आपका जाते हैं तो many, a few, several, some, both, तो वहां पर आपका प्लूरल वर्ब का फॉर्म यूज होता है. ऑलराइट. फिर उसके बाद में another rule, we need to be very careful, you know, when जब verb closer to subject placed होता है, like we have to be very careful in the use of verb if it is not placed close to the subject. most cases में subject के close हो रहा है ना, I am a good boy in that sense. ठीक है. अगर वो क्लोज नहीं है तो वहां पर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कहीं एरर ना कमिट हो जाए. जैसे कि इस सेंटेंस में नोटिस करिए, द कंडीशन ऑफ दीज ओल्ड हाउसेस इज वेरी डेंजरस फॉर द रेजिडेंट्स. यहां पर सब प्लूरल में ही है. अगर आप देखोगे तो कंडीशन ऑफ दीज ओल्ड हाउसेस इज वेरी डेंजरस फॉर द रेजिडेंट्स. लेकिन अगर उसको ब्रेक डाउन करेंगे हम तो लिसन टू इट. Subject and verb agreement, remember this, the verb has to agree with the subject always. ठीक है ना. with some exceptions, but mostly it has to agree with the subject. So here subject क्या है? Condition. We're not talking about the houses, we are talking about the condition of the houses. So the condition is in singular, so the verb has to agree with the condition, so it comes as a singular in this regard. The condition of these old houses, see residence भी यहां पर आपके हैं. ठीक है. प्लूरल है, हाउसेस भी प्लूरल, तब कंफ्यूज हो सकते, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस. ठीक है ना. टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट. ठीक है ना. द कंडीशन इज द सब्जेक्ट ऑफ द हाउसेस इज वेरी डेंजरस फॉर द रेजिडेंट्स. तो यहां पर आपका वर्ब अग्री करेगा विद द सब्जेक्ट व्हिच इज द कंडीशन. ऑलराइट. ठीक. कुछ रूल्स हैं जो अगर आपने लिख लिया अपने पास तो बहुत अच्छा है, और साथ साथ लिखते रहेंगे तो बहुत अच्छे से सीखते रहेंगे. ठीक है. सो with this we come to the end of that our wonderful, enriching and learning session which was on verbs. और जब आप कोर्स में एनरोल कर लेते हो, then after the successful completion you will be imparted with such a kind of a wonderful certificate which is approved by the MHRD, right? So with this I will end my session, and my lovely coordinator Prachi will come along and say a few words, share a few details with you. I presume I had made a lot of things clear to you. So over to Prachi now.
Thank you so much, Nikhil, for such a wonderful and informative session. I'm sure our students will find the session very informative and very helpful. I would like to give information about the course once again. This English Excellence course, the duration of this course is 1 month. This course will be conducted completely online, and you will get 2 live sessions per week, in which our instructor will clear English grammar concepts and will clear all your doubts, all your queries. If you have any, you can ask him in the session only, and he will clear the doubts. The course is a certification course. After successful completion of the course, you will receive a certificate from MHRD, Government of India, of which the sample is given on the screen. So you will receive the certificate like that. The course fees are rupees 999 plus GST. This this is a this is a short time limited period offer. We are giving 50% discount currently. So the course fees are rupees 999 plus GST. I would like to give our contact details in the chat box. You can write us a mail at support@millionlights.university, or you can also call us at the given number, which is this is our contact number. You can call us on the number, or you can write us at support@millionlights.university. Thank you so much. Yeah. With this, we will end the session. Thank you.